Illustration 22. Bhavya and Shlok are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Balance sheet of their firm as on 31st March 2017 is as under. Now, let's go through the balance sheet. First, capital. So capital will go to partners capital account. General reserve टिक कर दो, चला जाएगा पार्टनर्स को इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ब्रैकेट में लिख दो 3:2, ब्रैकेट में लिख दो 3:2. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नाउ वी हैव टू चेक इसमें कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं है. सो लेट्स गो टू द एडजस्टमेंट एंड चेक. वर्कमैन कंपनसेशन में कुछ है? कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. सो डायरेक्टली टिक कर दो, कोई भी क्लेम नहीं है, सो टिक करो. ये भी चला जाएगा 3:2. देन इन्वेस्टमेंट रिजर्व. नाउ इन्वेस्टमेंट रिजर्व है तो उसके सामने इन्वेस्टमेंट भी है. चेक करो इन्वेस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं है. सो टिक कर दो, तो टिक करो इन्वेस्टमेंट रिजर्व को. ये भी चला जाएगा 3:2. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. Then you have creditors, then you have bills payable. Now यहाँ पे you have goodwill. So old goodwill is there. Old goodwill will go to old partners in old ratio. So लिख दो 3:2. अर्जुन जी हाँ પછી હું લેક્ચર પતાઈ દઉં પેલું મને જીવ થઈ ગયો માં એટલા 3:2. Then land and building, उसमें अभी बाद में देखते हैं इसको. मशीनरी स्टॉक डेटर. नाउ यू हैव बैड डेट रिजर्व आल्सो, उसको बाद में देखते हैं. इन्वेस्टमेंट कैश बैंक. एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस फिक्टिशियस असेट, अगेन ब्रैकेट में लिख दो 3:2 distributed between partners. Old partners old ratio. They admitted Ayush as a new partner on 1/4 on the following condition. Ayush bought 5 lakh as his capital and 1 lakh as his share of goodwill in cash. तो बाद में इसको देखते हैं हम. Then value of land and building increased by 80,000. So टिक कर दो land and building को. Value of machinery is to be decreased by 1,60,000. Machinery को टिक कर दो. Provision for doubtful debt is to be kept 10% on debtors. So debtors में 10%, so 12,000 होना चाहिए रिजर्व, पर है सिर्फ 2,000, तो बैड डेट रिजर्व को टिक कर दो. Provision for outstanding repair expense is to be made ₹8,000. बाद में new profit and loss sharing ratio of all partners is to be kept as 2:1:2. From the above particulars, prepare past journal entries, prepare revaluation account, partners capital account, cash and bank account, and the new balance sheet after admission. So go through the question. First step, you find out the sacrifice ratio in rough. और फॉर्मेट बना लो. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट.
Ready with the format? Ready with the format? Okay, let's start with the sum now. Keep the textbook in front of you. Okay, first we go with now you will say कि सर क्यों हम लोग इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका तो सॉल्यूशन है, हम होमवर्क इसमें से डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे, तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना? पर ऐसा नहीं है, इसके लिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये इलस्ट्रेशन तुम्हें खुद करना है और एक्सरसाइज का सम मैंने सॉल्व किया है इन वीडियो लेक्चर, तो वीडियो लेक्चर देख के तुम्हें एक्सरसाइज का सम सॉल्व करना है, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में यू राइट डाउन बाय बैलेंस बॉट फॉरवर्ड। भव्य, श्लोक एंड आयुष। भव्य 4 लाख, श्लोक 3 लाख। Okay. General reserve distributed between partners. So by general reserve, 3:2. So 90,000 divided by 5. 18,000 into 3. So 54,000 and 2. 36,000. Workman compensation reserve. So by workman compensation reserve, 20,000 again distributed between partners क्योंकि कोई भी adjustment नहीं है. So 20,000, 3:2, 4s are 4 3s are 12, 8,000. By investment reserve, again distributed between partners. 10,000, 3:2, so 6,000, 4,000. Creditors, no adjustments, so outer column, balance sheet. Bills payable, no adjustment, so outer column, 60,000. Asset side goodwill. नाउ सबसे पहले ये जो गुडविल दिया है वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो यू राइट अ जर्नल एंट्री। चलो जर्नल एंट्री लिखेंगे सब। राइट अ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री विल बी भव्य's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 lakh, so 60,000. श्लोक कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 to goodwill account.
1 lakh. Being all goodwill debited to all partners in old profit sharing ratio. Write the journal entry, please. These sums are 8 marks in your board exam, so do it sincerely, please. Okay, proceed now. Goodwill done, land and building, there is an adjustment, so inner column. Machinery, inner column, 2 lakh. Stock, no adjustment, outer column. Debtors, inner column, 1,20,000. Minus bad debt reserve old. इनर का भी इनर कॉलम में लिखना 10,000. इनर का भी इनर कॉलम में. ये सब मेरे वीडियो लेक्चर्स में भी है, तो तुम वीडियो लेक्चर देख के भी सम सॉल्व करना, तो ये तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके, then again we draw a line. Okay, then investment, no adjustment, outer column, 20,000. Cash and bank, cash and bank account में to balance, bought forward 50,000. और कैश एंड बैंक भी बैलेंस शीट में लिख देना, so that you don't forget to write the balance of it. Okay, and advertisement campaign expense, इसका असेट साइड है तो डेबिट बैलेंस है, तो इसको करेंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट. सो टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस 10,000 है, भव्य में 3:2 का रेशियो, सो 6,000, 4,000. चेक कर लो कि बैलेंस शीट का हर एक अकाउंट हमने लिख दिया है कि नहीं. चेक कर लो बैलेंस शीट में जो भी दिया था वो सब हो गया. सो कैन आई नाउ से दैट पुराना बैलेंस शीट हो गया 0. यहां तक सबको पता चला? यू ऑल आर ओके विद द स्पीड, तो थम्स अप दे दो मुझे. आर यू ऑल ओके विद द स्पीड? ओके, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, किसी को डिफिकल्टी है तो रेज योर हैंड. इफ एनी वन ऑफ यू फील कि भाई सर थोड़ा और स्लो जाओ, तो आई कैन गो स्लो. फर्स्ट स्टेप में फिर से रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट स्टेप इज कि पूरा बैलेंस शीट जो ओल्ड था उसको हमने क्लोज कर दिया. जो असेट्स नए में ट्रांसफर हो गए वो नए में चले गए, जो लायबिलिटीज नए में जाने था वो नए में चला गया, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, कैश का बैलेंस कैश में, और जो पुराने अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स थे उन सबको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. पुराने जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस थे या फिक्टिशियस असेट थे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, तो उसको भी राइट ऑफ करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. नाउ यहां तक होने के बाद वी स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स. ओके, सो ध्यान देना, यू कैन टेक अ डिफरेंट कलर पेन और अ पेंसिल फॉर एडजस्टमेंट. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट, can you tell me what is the sacrifice ratio? So first let's find the sacrifice ratio.
सो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए भव्य, श्लोक एंड आयुष. ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 dash. New ratio is already given, 2:1:1. So 2/5, 1/5 and 2/5. Sacrifice ratio old minus new, 1/5. 2/5 minus 1/5 is equal to again 1/5. So sacrifice ratio is 1:1. Okay, keeping this in mind, let's proceed now with the adjustments. Now in adjustments, we start with first one. Ayush bought 5 lakh as his capital and 1 lakh as his share of goodwill in cash. So let's write the journal entry. We write the journal entry. Ayush bought cash 5 lakh for capital and 1 lakh for his share in goodwill. So cash account debit. Cash account debit 6 lakh to Ayush capital account 5 lakh and 2 premium for goodwill 1 lakh. Narration is important. When you do this sum as homework, you'll also have to write all journal entries and the narration. We will go through it after the sum is over. Second entry, premium for goodwill account debit 1 lakh. This will go to old partners. So to Bhavya capital account and to Shlok capital account. Now it will go in what ratio? Equal ratio, sacrifice ratio. So 1:1, so 50,000. Write in the bracket sacrifice ratio. You have to write the narration also, but as of now, you write in the bracket. ये सब होमवर्क में प्रॉपरली करना है तुम्हें. 1:1. Let's do the posting. Now posting में सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल अकाउंट 5 lakh and to premium for goodwill 1 lakh. If you are using a mobile phone to watch the lecture, my handwriting may not be visible to you. So that's why I'm speaking also. So you can write, keep the textbook in front of you. Okay, just imagine you are sitting on the last bench and the board is not visible. अब तुम क्यों लास्ट बेंच पे बैठे हो वो तुम्हें खुद पता है कि बोर्ड देखना ही नहीं चाहते तो तो भी तुम सर जो बोलते वो लिख पाते हो तो वैसे खुद लिखना है. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम
फॉर गुडविल. प्रीमियम को प्रेमी या प्रेम मत कर देना इन एग्जाम. ओके, प्रीमियम ही रखना. एब्रीवेशंस कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स. ओके, देन अमाउंट लिख दो. 1 लाख था तो सबको दोनों के हिस्सों में आ गया 50,000 50,000. Very important, if you will not find the sacrifice ratio, then your answer will go wrong. Okay, next one. So goodwill first adjustment is done. Let's go to the second adjustment. Value of land and building increased by 80,000. So plus 80,000, 4,30,000. Any increase in the value of asset, revaluation account credit side by land and building. 80,000. Then machine decrease up to 1,60,000. यानी 1,60,000 का वैल्यू कर देना है. So outer column will be 1,60,000 minus कर दो 40,000. Reduction in the value of asset is loss. So revaluation account debit to machinery account. 40,000. Next, provision for doubtful debt. Stop writing for a while. It's important. ध्यान दो, provision is important. अभी तक हमारा provision कितना था? 1,20,000 पे 10,000 था, पर अब हमें कितना करना है? 10%. So 1,20,000 का 10% is 12,000. यानी 10,000 था, 12,000 करना है, 2,000 से इंक्रीज करना है. तो -10 किया, और कितना माइनस करना पड़ेगा? माइनस बैड डेट रिजर्व न्यू, अगेन 2,000. सो माइनस करेंगे दोनों मिला के 12,000. So outer column 1,08,000. तो 10,000 था, 10,000 था और 2,000 हमने एडिशनल बैड डेट रिजर्व कैलकुलेट किया. तो एडिशनल बैड डेट रिजर्व का एंट्री क्या आएगा? नॉर्मल एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज profit and loss account debit to bad debt reserve account credit. But here we don't have profit and loss account, so it will be revaluation account debit to bad debt reserve account. 2,000. बैड डेट रिजर्व का कंसेप्ट पता चल गया सबको? अगर कम करना होता, 10,000 से 6,000 करना होता, तो फिर क्या करते? ये एंट्री हो जाता रिवर्स. इज दिस क्लियर? ओके, देन provision for outstanding repair expense is to be made at 8,000. अब 8,000 का प्रोविजन करना है, so liability increase, so revaluation account debit to provision for outstanding repair expense. Amount is 8,000. Second effect, balance sheet liability, outstanding repair expense, 8,000. Now, as you all know that before you start closing, चेक कर लो हर एक एडजस्टमेंट का बराबर इफेक्ट दिया है कि नहीं. टेक अ डीप ब्रेथ, वेट, check whether you have given proper two effects, inner column, outer column, total सब सही है कि नहीं. उसके बाद you start closing with first revaluation account.
revaluation account, we have to see which side is more. So over here, credit side is more, so we write the total. $80,000, 80,000 to partners capital, Bhavya and Shlok. Find out कितना प्रॉफिट आया. Those who are new, ध्यान दो, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड इज मोर, सो क्रेडिट साइड दोनों जगह 80,000 लिखना है, उसमें से ये सबको माइनस करना है. सो वी गेट 30,000. ये 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो 3:2. सो 18,000, 12,000. Second effect, partners capital account credit side by revaluation account. 18,000, 12,000. Total. Now again same philosophy. First we will close Bhavya. So let's check which side is more. And then we find the balance. Balance carried forward. Credit side is more, 4 lakh plus 54,000 plus 12,000 plus 6,000 plus 50,000 plus 18,000. 5,40,000. Same we write over here 5,40,000 minus 6,000. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड ध्यान दो, एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना बाकी रह गया है. एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना बाकी रह गया है, वो है गुडविल. टू गुडविल, जो ओल्ड गुडविल हमने राइट किया था उसका इफेक्ट भी दे दो. टू गुडविल 60,000 एंड 40,000, इसका इफेक्ट देना बाकी था. ओके, नाउ बैलेंस करो. 5,40,000 minus 66,000, 4,74,000. 4,10,000 श्लोक का टोटल. minus 44,000. अब जो नया पार्टनर आया था वो गुडविल के साथ साथ कैपिटल भी लाया था, उसका इफेक्ट भी हमारा बाकी है देना. सो वो भी पास कर दो बाय कैश. बाय कैश अकाउंट आयुष में अमाउंट इज 5 लाख. बाय कैश अकाउंट आयुष में 5 लाख. और उसको भी बैलेंस करो. 5 लाख, 5 लाख ट्रांसफर कर दो. 5 लाख all will go to capital of the new firm. Bhavya 4,74,000, Shlok 3,66,000 and Ayush
5 lakh, 13 lakh 40,000. Now, cash, we close the cash account. We close the cash account. So cash account में to the total 6 lakh 50,000. 6 lakh 50,000 by balance carried forward. 6 lakh 50,000. Do the total now. क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया सबका, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 13 13 नहीं, इलस्ट्रेशन 23. किसी को डाउट इसमें? सबका टैली हो गया? सबका टैली हो गया? चलो बहुत बढ़िया. इलस्ट्रेशन नंबर 23. चलो मार्किंग करो इलस्ट्रेशन 23 में पहले खुद. चलो अब ध्यान दोगे सब. Illustration 23. Tarana and Jinisha are partners in a firm. Their balance sheet as on 31/3/2017 was as under. Capital Tarana Jinisha. Workmen compensation reserve. Now workmen compensation reserve is given. First let's check, is there a
Is there any adjustment over here? We need to check this. So let's check whether any adjustment is there for workman compensation reserve. नीचे check करो. Claim accepted. You can see this over here. Claim accepted for workman compensation 8,000. तो ऊपर आ जाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को टिक कर दो. इसको हम बाद में देखेंगे. 12 में से 8,000 का क्लेम आ गया है, बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, सो यू कैन राइट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग द रेशियो. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. अगर नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को? We will take it as equal. So we will take profit sharing ratio as equal. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो. Now investment fluctuation fund is given. Now investment fluctuation fund में चेक करो इसमें कोई एडजस्टमेंट है. So let's read and see. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ भी दिया है. Yes, Jinisha will take over investment at 48,000. So again investment fluctuation fund में क्या आएगा? 4,000 का investment fluctuation fund है. Investment is of 50,000. 50,000 का investment है. 48,000 में किसी ने ले लिया तो 2,000 का लॉस हुआ. वो लॉस जाएगा from investment fluctuation fund. टिक कर दो. अगेन ब्रैकेट में 1:1 लिख दो. Then provident fund is a liability, उसका कुछ भी नहीं करना है. Then bad debt reserve बाद में देखते हैं इसको. Creditors, outstanding expense, goodwill टिक कर दो. Distributed between old partners, old ratio 1:1. Then land and building, machinery, investment, debtors, stock, cash. Cash will go to cash account. Research and development expense and profit and loss. दोनों को टिक कर दो. Both will go in equal ratio. Now let's see the adjustment. Rihan will bring. They admitted Rihan as a new partner. Rihan will bring 2 lakh as his capital and 18,000 for his share of goodwill in cash. Any difference in the amount of goodwill is to be adjusted to his capital account. इसको हम बाद में देखेंगे. बहुत ही important concept है ये. New profit sharing ratio will be 4:3:3. Okay. Goodwill is to be valued at 1 lakh. So new goodwill is given 1 lakh. So रिहान का गुडविल में कितना हिस्सा आएगा पहले वो चेक कर लेते. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज 4:3:3. सो जो नया गुडविल है 1 लाख का, उसमें उसका हिस्सा आएगा 3/10 which comes to 30,000. उसमें से वो कितना कैश लेके आया? 18,000 कैश लेके आया. तो बाकी का 12,000 will be adjusted in his capital account. तो ये कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे 12,000. ओके, तुम भी ऐसा स्क्रिबल कर लो, फिर सिस्टमैटिक वर्किंग करेंगे. क्लेम एक्सेप्टेड टिक कर दिया. जिनिशा विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट. जिनिशा इज ऑल्सो द ओनर. इसको भी हम बाद में देख लेते हैं. Accrued interest later on 6,000 is not recorded, so later on. Bills payable drawn by creditor 10,000 is accepted.
but not recorded in books of accounts. So creditors को टिक करो, creditors को टिक करो. Then book value of land and building is 20% less than the market value. Book value of land and building is 20% less than the market value. So tick करो. Extremely important adjustment mark करो इसको. इसको भी extremely important adjustment mark करो. Out of insurance premium paid, 12,000 is to be carried forward to the next year. So ये अलग से हम record करेंगे revaluation account में increase in asset revaluation account credit. Okay. Check कर लो सब कुछ. Make the format.
Should we start the sum now? Are you all ready with the format? Thumbs up दे दो, ready हो गए हो तो. Others are still doing. Okay, now let's start the sum. Please be careful, students, while we are doing this sum. Now, first of all, let's check the balance sheet. Capital. Tarana and Rinisha are partners in the firm. The balance sheet as at 31/3/2017 was as under. Now, capital. So, by balance brought forward, Tarana 1,90,000, Jinisha 1,21,000. Workman compensation reserve. So let's go to that adjustment now. Workman compensation reserve. Now see the adjustment. In the adjustment, we have workman compensation reserve. You give it working note number 1 was rupees 12,000 minus claim of 8,000. So how much is to be distributed between partners? 4,000. 4,000 is to be distributed. So over here in balance sheet, workmen compensation fund, inner column 12,000 minus claim 8,000 minus distributed 4,000. Outer column dash. Now journal entry for this will be workmen compensation reserve account debit 12,000 to claim for workmen 8,000 and to old partners Tarana and to Jinisha 4,000 will be distributed between partners in equal ratio. So 2,000, 2,000. Write the journal entry and give the effects. By workman compensation reserve 2,000, 2,000. Claim of workmen 4,000. Claim of workmen 8,000. You understood this entry, all of you? Okay, let's proceed. Now, next, investment fluctuation fund. Now, एक काम करते हैं, investment fluctuation fund 4,000. चलो ये भी साथ में ही कर लेते हैं. ठीक है. Now, as you all know that all these funds will become zero. तो investment fluctuation fund का भी working कर लेते हैं. Working note 2
investment fluctuation fund. Now, what is the investment fluctuation fund? First, let's write it. 4,000. Now, parallelly, what is the investment? Investment is of rupees 50,000 and minus reduction is 2,000. So, investment is to be valued at 48,000. Adjustment number 5, which is taken over by Jinisha. So 2000 reduction will be adjusted over here and balance 2000 will be distributed between partners. We write the entry investment fluctuation fund account debit to investment account 2000 का जो रिडक्शन आया एंड टू तराना कैपिटल अकाउंट 1000 ये 2000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो write the entry important entry write the entry proceed now okay let's give the effect we give the effect now investment fluctuation fund जो 4000 था उसमें से 2000 लॉस में चला गया 2000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जगह नहीं है इसके लिए मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे इफेक्ट ऐसा इफेक्ट दे नहीं रहा हूँ ओके तुम जब फिर से करोगे ये सब होमवर्क में तो ये तुम अकॉर्डिंगली इनर वर्किंग कर लेना नाउ इसमें से बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स को दे दो 1000 जो बच गया इन्वेस्टमेंट हम बाद में देखते हैं जब इन्वेस्टमेंट पे आएंगे तब प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी आउटर कॉलम 16,000 बैड डेट रिजर्व डेटर्स को टिक करो डेटर्स में से माइनस करेंगे क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट creditors 30,000 expense सर क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट हाँ क्या एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स पे 7th एडजस्टमेंट ओ आई एम सॉरी ये टेक्स्ट बुक में मैंने टिक नहीं किया था इसके लिए गलती हो गया लेट मी टिक फर्स्ट ठीक है और इसको इनर कॉलम लिखना पड़ेगा तो आई रेक्टिफाइड मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेता हूँ ठीक है क्रेडिटर्स
inner column 30,000, and then outstanding expense 15,000. उसमें कोई adjustment है outstanding में? No. $15,000. Okay. Asset side goodwill. Chalo, let's write off goodwill first. Working note 3. पहले old goodwill we write off. So we write the entry Tarana's capital account debit, Finisha's capital account debit to goodwill. Goodwill is 14,000. Equally, so 7,000, 7,000. Old partners, old ratio. We do the posting. To goodwill. 7,000, 7,000. Now, land and building, inner column, extremely important adjustment. बाद में देखेंगे adjustment, पहले posting कर देते 1 lakh. Machinery, is there an adjustment in machinery? No adjustment in machinery. Outer column 80,000. Investment, inner column, we have already done the adjustment. We know the adjustment 50,000. Debtors 70,000 minus bad debt reserve. You can either deduct it from here or show it separately on the liability side. In the textbook, if you see the solution, it is written on the liability side only, but over here for better presentation, I am decreasing over here. You can follow the textbook, that is also absolutely right. So minus bad debt reserve, 20,000. 50,000. Stock. Let's check any adjustment. No adjustment, 36,000. Cash. To balance. Bought forward cash account 40,000. Cash हम यहाँ लिख के रखते हैं. Research and development and profit and loss. Partners capital account. To research and development 8,000, so equally, so 4,000, 4,000. To profit and loss account equally 5,000, 5,000. Balance sheet is completely closed. So let's proceed now with the adjustment. Okay, Rehan will bring 2 lakh as his capital and 18,000 as his share of goodwill in cash. So let's write the entry cash account debit 2 lakh 18,000
to Rihan capital account 2 lakh and to premium for goodwill account 18,000. Now this premium of 18,000 which has come in cash, we give it to the old partners in sacrifice ratio. Premium for goodwill account debit 18,000 to Tarana capital account and to Jinisha capital account. Now in sacrifice ratio, so we have to find the sacrifice ratio. Let's find out. Tarana, Jinisha and Rihan. Old ratio 1/2, 1/2. New ratio 4/10, 3/10, 3/10. Sacrifice 1/2 minus 4/10, 1/10. 1/2 minus 3/10, 2/10. ये कैसा आया इतने फास्ट, सर को कैसे पता चल गया? बहुत सिंपल है. 1/2 is 0.5 and 4/10 is 0.4. So 0.5 minus 0.4 is 0.1, which is 1/10. Again 1/2 is 0.5 minus 0.3, so 0.2, which is 2/10. So sacrifice ratio is 1:2. तो इन पार्टनर्स में बेच दो 18,000 in the ratio 1:2, so 6,000 and 12,000. ये फर्स्ट, ये सेकेंड. पर ये हमारा प्यारा रिहान, तुम यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे हमने रिहान का गुडविल का वर्किंग किया था. अच्छा, हमने वर्किंग किया था टेक्स्ट बुक में, तो हमने ऐसा वर्किंग किया था कि न्यू गुडविल is equal to 1 lakh share of Rihan 1 lakh में, so 1 lakh into 3/10, which is equal to 30,000 minus cash 18,000, जिसका दोनों एंट्रीज हमने दे दिया. तो बैलेंस 12,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट. Do this working if you have not done. So over here, Rihan's capital account debit 12,002. Tarana's capital account to Jinisha's capital account 1:2. 4,000, 8,000 sacrifice ratio 1:2. Posting. Posting. Let's go to posting, which is very important. सबसे पहले पैसा आया कैश और बैंक टू
Rihan's capital account 2 lakh. To premium for goodwill 18,000. By premium for goodwill 18,000 चला गया 12,000 सॉरी 6,000 12,000 एंड देन पार्टनर जो लेके नहीं आया, अब ध्यान देना थर्ड एंट्री का पोस्टिंग ध्यान दो प्लीज, ये एंट्री का पोस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रिहान कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तराना क्रेडिट, जिनीशा क्रेडिट। सो बाय रिहान कैपिटल अकाउंट amount is 4,000 8,000 debit side to Tarana 4,000 to Jinisha 8,000 बाय कैश। कितना कैपिटल लेके आया था रिहान? कैश लेके आया था 2 लाख। हो गया सबका यहां तक? ओके अब ध्यान देना, नेक्स्ट एडजस्टमेंट is very important. अच्छा, goodwill we have already done. Now, next adjustment, claim accepted for workman compensation also done. Jinisha will take over investment at 48,000. So, chalo, let's do this. Jinisha took over investment at 48,000. So, जितना भी investment का value था minus taken over at 48,000 and minus loss 2,000. So outer column dash अब इन्वेस्टमेंट बिजनेस में रहा ही नहीं। ये जो 2,000 का लॉस हुआ वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से भी माइनस हो गया, जो बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जिनीशा टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, सो जिनीशा is the receiver, debit the receiver and investment goes out. So capital account में to investment, जिनीशा के कॉलम में डेबिट साइड 48,000, जिनीशा के अकाउंट में 48,000। accrued interest of ₹6,000 is not recorded. So जो इंटरेस्ट हमें accrue हो गया, मिलने वाला था, वो अभी तक मिला नहीं है. So it is receivable interest. You can write in the bracket receivable interest. In the textbook you can write receivable interest. Receivable interest. So बैलेंस शीट में हमारे असेट साइड आ जाएगा accrued interest 6,000, revaluation account credit side by accrued interest. Bills payable drawn by creditor was accepted but not recorded. The entry is simple.
क्रेडिटर्स को कर देंगे लेस और बिल्स पेएबल को कर देंगे इंक्रीज, या क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो बिल्स पेएबल इसमें से माइनस हो गए 10,000, आउटर कॉलम 20,000, bills payable 10,000. Eighth adjustment हम लास्ट में करेंगे. First let's finish off the ninth adjustment. Eighth is the most important. Later, out of insurance premium paid, 12,000 is to be carried forward to the next year. So next year carry forward कर दिया तो prepaid. So by prepaid insurance, increase in asset 12,000. Second effect, balance sheet asset side, prepaid insurance 12,000. Now extremely important eighth adjustment. Please ध्यान देना सब. Now in the eighth adjustment, it is given that book value of land and building is 20% less than the market value. Now it means what? Book value यानी value as per the books, यानी balance sheet में जो value है वो वाला value is 20% less than the market value. So first let's assume market value as rupees 100. So if market value is 100, 20% less, तो book value हो जाता है 80. तो अब बुक वैल्यू 80 के सामने ध्यान देना प्लीज. बैलेंस शीट में देखो क्या वैल्यू दिया है. टेक्स्ट बुक में देखो 1,00,000 है उसका वैल्यू. बुक वैल्यू 80 है तो उसका वैल्यू है 1,00,000. तो उसका मार्केट वैल्यू अगर 100 है तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए. सो क्रॉस मल्टीप्लाई विच इज 1,00,000 into 100 divide by 80, which comes to 1,25,000. So this is the market value, 1,25,000. Extremely important. अगर तुमने directly 20% plus या minus कर दिया तो your sum will go wrong. ये adjustment पता चला सबको. पेट 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 Yes. पता चला एडजस्टमेंट. ओके. नाउ सबको ये एडजस्टमेंट पता चल गया. किसी को कोई डाउट? यहाँ पे एडजस्टमेंट ऐसा है, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू. तो अब 20% लेस है मार्केट वैल्यू से उसका बुक वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू कितना है? तो हमने क्या किया, वी एज्यूम मार्केट वैल्यू एज 100, 20% माइनस किया 80 मिल गया. तो 80 के सामने 1,00,000 तो 100 के सामने 1,25,000. तो ऊपर चले जाओ बैलेंस शीट में प्लस कर दो 25,000. So market value is now 1,25,000. Revaluation account में credit side by land and building 25,000. Sum को close करो. Find out the profit, transfer it to capital account. कैश को क्लोज करो.
Close the sum and check the answer. Go through the working. Okay, now अब ध्यान दो सब.